Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, listeners, viewers, whoever are viewing this video, whoever are watching this video, today I have taken prepositions, but not all prepositions. We know the number already, how many prepositions are there, but today I have taken only two prepositions. One is to and another is for. The two prepositions that are most of the times confused. Many a times the users feel confused where to use them, what is their exact use. But today I will try to make things clear within this video that how we will use them with different uses. Like today we will use this to. I will use it here as a preposition, and I will use it with nouns as preposition. I will use it with a verb. I will make it an infinitive. And then for, which is again a preposition, I will use it as a conjunction as well. You might be noticing the board. I have planned the board earlier. I have composed the board which is ready to go. So let's go. Prepositions we already know. So let's go to. Where do we use to? To mean we use, you might be looking this word, transfer or move or change from one place to another place. Like I have used I go to school. Here I am the subject, I am the worker. I go from one place to another place. This shows my transfer. I go to school. That is my destiny. My school is my destiny. So I transfer myself, or I move from one place to another place. I go to school. School is a noun. We have used to in front of a noun in order to show my destination. So this to is used as a preposition. Once again, Sarah goes to office. Sarah goes. Sarah changes her place from one place to another place. She transfers herself. She moves from one place. She changes her place. She rotates. Whatever the uses of synonyms you can use for this movement, transformation, whatever. So Sarah goes from one place to another place. Sarah goes to office. And then there is another word. Imran gave his car to Rahil. Imran gave his car to Rahil. इमरान ने अपनी कार जो है वो राहिल को दे दी. यानी इमरान की जो कार है वो शिफ्ट हो गई. इमरान की जो कार है वो मूव हो गई from Imran to Rahil. Now Rahil will use the car. Got it? Hope you two will give me your cars to use. Then we have some other uses of the same to. Let's understand. Earlier I was using it before noun. School a noun, office a noun, Rahil a noun. We use to in front of a noun. Now let me use it. I eat food to get energy. I eat food to get energy. Here get is a verb. Here get is a verb. I would use red pen, another color, so you will identify. I eat food to get energy. Here is one part of the sentence. I eat food. What do I do? I eat food. But why do I eat food? To get energy. We already know that infinitives give us further informations about the reasons what we do. I eat food. But why do I eat food? To get energy. So this to help us to give further information about why do I eat food. Another, we wash cups. We wash cups. Why do we wash cups? To clean them, to make them clean, to make them sanitized. To sanitizing आज जो fashion चल रहा है word. We clean the cups to make them virus free, infection free, germs free. तो हम जो cups को clean, तो मैंने clean verb से पहले फिर से इसको किया. यानी मैंने एक base verb को to के साथ जोड़ा, एक preposition को verb के साथ जोड़ा, तो infinitive बन जाता है. यहाँ से खाली preposition था, noun के साथ था. तो similarly we go to college. हम college जाते हैं. We go to college to learn. Why do we go to college? To learn. यहाँ verb से पहले again. We go to college to learn a language.
एक लैंग्वेज सीखने के लिए हम कॉलेज जाते हैं. Why do we go to the college? We go to the college to learn a language. ये थी to preposition जो है उसकी दो यूज. एक वर्ब से पहले हमने इसको यूज किया एज एन इन्फिनेटिव बनाया वर्ब और to को, और यहाँ पे नाउन से पहले किया सिंपल प्रीपोजिशन किया. इसमें ट्रांसफर शिफ्ट दिखाए, इसमें रीजंस दिखाए. आई ईट फूड क्यों करता हूं मैं, क्यों खाता हूं खाना, एनर्जी हासिल करने के लिए. और नीचे वाले ऊपर वाले सेंटेंस में हमने शिफ्ट दिखाया, ट्रांसफर दिखाई, मूवमेंट्स दिखाई कि हम एक दूसरी जगह से दूसरी जगह. आई गो टू स्कूल, आई गो टू मुंबई, आई गो टू फॉरेन कंट्रीज, वट एवर आई यूज टू, वेयर देयर इज डिस्प्लेसमेंट, वेयर देयर इज ट्रांसफर, वेयर देयर इज मूवमेंट. This is called the use of to. And let's go to for. For, what I can say, I have used towards help. We do help to someone. Like, I will construct a house for you, my friend. That means I'm going to help my friend. I'm going to construct a library for my readers. मैं अपने readers के लिए एक library बनाना चाहता हूँ. I'm going to help them. They are going to benefit. They are going to get benefits from my library, from my house, from my auditorium. I'm going to buy a car for my friends. I'm going to buy a car. मैं एक कार लाने वाला हूँ अपने दोस्तों के लिए. They are going to benefit it. So ये पहली यूज है for के लिए. यहाँ पे लिखा है मैंने, he plays for his country. सचिन क्रिकेट खेलता है, किसके लिए खेलता है, अपनी कंट्री के लिए खेलता है, यानी अपनी कंट्री को बेनिफिट देता है. सचिन plays cricket for the benefit of his country. Sita will sing for me. अभी ऑडिटोरियम में है, मैंने किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, मैंने माइक उठाई, मैंने बताया नाउ सीता, a singer there, मैंने बताया सीता will sing for me. अब सीता मेरे लिए गाएगी तो बेनिफिट मुझे होगा. सीता के गाने से मुझे हेल्प मिलेगी, मैं तो रिलैक्स हो जाऊंगा. मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो कुछ मिलेगा वो अलग बात है, तो बेनिफिट आ जाएगा, हेल्पफुल होगा मेरे लिए. तो फार को हम यूज करते हैं इस प्रीपोजिशंस को अपना बेनिफिट बताने के लिए, अपना हेल्प बताने के लिए, दूसरों के हेल्प के बताने के लिए. वी यूज दिस in order to mention that help, that benefit, right? Then I have used Rahil earns. Rahil works hard, he earns money for his kids. Rahil earns for his kids. He works hard for his kids. He gives the benefit of his earnings. He gives the benefit of the money he earns to his kids. That means the benefit, the help goes to the kids, goes to the family of Rahul. And that is the very first use. And then we have for. We can use it. Conjunctions. आजकल की दुनिया में because की जगह पे we use because. मतलब like I came late because I could not find any car. I was poor because I had no sources to manage my finances. कुछ ऐसे सेंटेंस तो because जो यूज करते आजकल की दुनिया में पहले से ही होता है, लेकिन अभी भी ज्यादा हो रही है. पहले बुक्स में ज्यादा नहीं पाते थे हम, अब देखते हैं तो फार को एज अ कंजक्शन मॉडर्न वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है. ये कुछ लोग उनको कंफ्यूजन होगा कि पहले से ही था, लेकिन बुक्स में ज्यादा नहीं था उस तरह, अभी है. तो मैंने एक दो एग्जांपल्स कंजक्शंस के लिए. कंजक्शन आपको ऑलरेडी पता है फार को, कंजक्शन दैट जॉइंस द टू स्टेटमेंट्स. यहाँ पे मैंने कुछ कंजक्शंस को इनबॉक्स किया हुआ है, यहाँ पे एनसर्कल किया था, यहाँ पे इनबॉक्स किया था, यहाँ पे अंडरलाइन किया था, ताकि वेरिएशंस आप कुछ समझ आ जाएं. तो यहाँ पे है I could not catch the bus for I had no news of it. यहाँ पे कंजक्शन इस्तेमाल, इसी फार को जो अभी हम प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल करते थे, अब इसी फार को I could not catch the bus, मैं गाड़ी को पकड़ नहीं पाया. Why? Because मैंने अभी बताया इंस्टेड ऑफ because हम यूज करते हैं. Because I had no news of it, मुझे पता नहीं था बस का क्या टाइम है. Without using a full stop, we use the full stop at the end of the sentence. So here I mentioned I could not catch the bus for I had no news of it. मुझे इसकी कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं. Ram was punished. Salman was punished. Ram was punished. Harish was punished. Why? For he broke the rule. उन्होंने कानून तोड़ा. Salman was punished by the police for he killed a deer. Afnan was punished by the traffic police for he broke the signal. Right? These are some of the examples I use to mention it as a conjunction. And that's it. I hope you enjoy, you understand.
Let me remind you again, here we use to transfer our movement from one place to another place, our transfer. I go to school, मैं यहाँ से स्कूल जाता हूँ. Sarah goes to office, एक जगह से दूसरी जगह जाती है. Imran gave his car, the car goes from Imran to Rahil. मतलब car shifts, car moves. And here is an infinitive, energy मिलती है. Why do we? एक reason मिलता है हमें. To get food, to get energy, to clean the cups, to learn a language. We go college to learn a language. We wash cups to clean them. And similarly, यहाँ पे far जो है मैंने benefit के लिए बताया था. Rahil earns money for his kids. Sita will sing a song for me. और ये ऊपर वाला जो मैंने बताया, Ram was punished for he broke the rule, क्योंकि उसने rule तोड़ा. ये एक as a conjunction था. I hope you will subscribe my channel. अगर फायदा लगता है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें. और मैंने अर्लियर बताया कि मेरी चैनल जो है ये सिर्फ एजुकेशन सर्व नहीं करेगी, इंफॉर्मेशन भी होगी. कल जो हमारा अगला लेसन होगा वो 10th के लिए होगा, 9th के लिए रिलेटिव क्लासेस होंगे. और उसके बाद जो अगला लेसन होगा इंशाल्लाह उसमें क्रिकेट की बात होगी. शोएब अख्तर पे हम डिस्कस करेंगे. द ओनली क्रिकेट का स्टार जो मेरा फेवरेट बॉलिंग में रहा है, शोएब अख्तर, वो पेस स्टार, उनके बारे में डिस्कस होगी. एंड दैट्स इट. I hope you will subscribe the channel, share the channel.